Cool. 1 second. Cool. This is the feedback tab. Uh, some people reached out to me for you know uh, getting clarity regarding the feedback. Most of अरे यार, please be on time, guys. So most of the feedback were, that the points made were not that great, and many of you, don't have a decent submission, as in neat and clean submission. So as I get it that conveying your idea is the most important part of this AWT. But apart from that, you should also keep in mind that the sanity of your submission also matters. If you write your this AWT in very hurried manner, the handwriting is not good, or you make a lot of cuts. So that makes it difficult for the reader to understand your the piece that you have written. He has to put in extra efforts to do that. Please keep that in mind. Apart from that, I'll. I'm getting a echo for my voice. I don't know what's happening. 1 second. Is my voice echoing for you as well? It was, but now it's fine. Okay. Well, I think it had to do something with Shane's setting. Cool. So I have few feedback points. I'll go about them one by one. So the first and the most important one is your AWTs lack structure. What do I mean by structure? I'll explain in brief. So basically, when you write an AWT, the first thing that you should write is the first sentence, or the first sentence might be about what did you understand of the from the argument. Like, if you can write that, okay, the argument mentioned of is so and so, or something like, I understood this from the argument, one liner, two liner. So your understanding, like, or just introducing the piece that was given to you as a question. The second is you communicate your stance. What's your stance about what's your stance about the argument, whether you are in favor of the argument or you are against the argument, you want to counter it or you want to support it. Mention that. And then after you have mentioned it, you can go like, okay, after I would like to uh, you know highlight or pinpoint some pointers that I think are the flaws in the argument or are good things in the argument. And then you start giving your pointers. Cool. Then you write your pointers. Ideally, you should have, it's good to have three pointers. I don't think anybody gets the time to write four. But it's not about the pointers. If you write two solid points, that would be evaluated and considered better if it were solid compared to the other person who just wrote, let's say, 4 points, and the points were very basic. Cool. So there's no hard limit on the number of points or minimum criteria, but three is considered as an ideal number. After you have given your points, you go on to state that, uh, having pointed out the flaws in the argument, I would like to give certain recommendations that will help to
alleviate the flaws that's there in the argument, and then you could give some recommendation as to how you think the veracity or the logic of the argument can be enhanced, if the argument had so or so elements in that. Let's say, uh, a basic example, like the question that we shared with you had aspiring actress. If it was just actress, okay, there you could have just gone there you could have just written in the end that, okay, if I had the idea whether the actress who is saying this, whether she made it big in Bollywood, or she couldn't make it big in Bollywood, whether she she's still struggling, or just give me 1 second. Just give me 1 second. Yeah, sorry about that. So, so let's say if you had a data point that the actress is a well-established actress, let's say Priyanka Chopra. So if Priyanka Chopra is saying that it's very difficult for outsiders to get into Bollywood and make it big there, so that point will have more weightage compared to someone else who you know couldn't make it that big. Are you getting my point? Just uh, like the person who is saying it, that adds credibility to it. So your article had aspiring actress, but I'm just saying in general, if it didn't had aspiring, there you could have included this point as a recommendation. And there can be other recommendations as well in your AWT. So the basic idea here is introduce the topic, communicate your stance, go on and say that, okay, now I'll be evaluating the different pointers that are there. Write the pointers. After giving the pointers, you can say, okay, after having countered my argument, these are certain recommendations, and then write your recommendations. Now, many people ask me if I want to give recommendations in the pointers itself. So, if your recommendation is very specific to the point that you are mentioning while, countering the argument, you can state it there itself. But if it's a generic point, you can state that in the end. So, am I clear with the structure? Any doubts with the structure? Once we have pointed out, like enhance the logic, what are we supposed to do after that? Like just end it? Sorry. Matlab, after we have eliminated the flaws, like given a recommend. So you don't eliminate the flaws, you point it out Yeah, first. yeah. Okay. Uh, After you give recommendations, you can't say that, okay, if somebody did this argument would have become flawless. You can't write, because Yeah. this is a very extreme stance. So give your recommendations and say that, okay, I think if so and so was there, the argument could have made more sense. This is what I'm trying to say. Uh, so did I answer your question? Or Okay. After the recommendation, like we'll recommend. after the recommendation, you can end it. Like, it's because you've already summarized the flaws there, and you have already said that, okay, I have already pointed it out, and this is how you can strengthen it. You can write your recommendation, and that's it. Nothing else is needed. Cool. So that's what I'm saying. If somebody supports the argument, then the recommendation part, it's a tedious job to give recommendations for an argument which you think is already correct. I hope you are getting my point. So that is why most of the people counter the argument so that they can give recommendations towards the end. So this was one feedback, and many of you, you know, your AWDs lack this structure. Second, don't beat around the bush. People, I have read some AWDs wherein people, uh, so I got their stance in the first sentence itself that, okay, this argument seems flawless. Sorry, this argument has flaws according to me, and because it's not backed by something or something of that sort. First line, you mentioned that.
They have written a whole paragraph itself in the starting, just rewriting the same sentence. It's more like fillers in your AWT. Why are you doing it? Like, after reading the first line and after reading the first paragraph, my understanding from the first paragraph was same. So basically you wasted that space for yourself. Never beat around the bush in AWT, because the space might seem a lot to you, but remember, many people are using it very with utmost care and attention, so that they can convey more valuable points rather than just filling up the page. Okay? And also it becomes boring for the reader, man. Like, I already know that you are against it. Why are you writing a paragraph about it? Doesn't make sense. Cool. Cool. Structure covered. Second was don't beat around the bush. Okay. Then there is a problem. Uh, your job is to find out flaws in the assumptions that were made while making the statement. Your job is not to attack the statement. Many of you have attacked the statement rather than attacking the assumptions. You have come up with points like, no, I disagree with her. Uh, you know, Many people have come from like Ranveer Singh and whoever made it big, the outsiders. You are saying that so and so happened here. You are attacking the argument. That's not your job. You can do this. If you want to have a personal opinion, do it. Have it towards the end, and that too very little, like, or maybe one or two line if you feel like doing it. Uh, but your whole argument cannot be about attacking the content that's there. Talk about the assumptions that, okay, I think the comparison that has been made here between industries is a faulty, and the qualities that it takes to make it big in so and so industries is different. These are points which are attacking the assumptions, not the argument. But when you say that uh, Ranveer Singh made it big in the Bollywood, how can she say this? This is something which. So this is where you are attacking the argument, not the assumptions. Am I clear to all of you? I want each one of you to understand this point because it's very important. If you have any doubt, please speak up. Hello. Yeah. Yeah. So this point is not very clear to me. Suppose if I say that so individuals coming from business backgrounds have made it big in business. So if I take that stance, will I be attacking the argument or I'll be speaking against it? Okay. See, can you please mute Sorry. your. Yeah, sure. Yeah. So the point I'm trying to convey here is, if you are giving examples, okay, if your examples uh, strengthen the point that you are making about the flaw, or about the flaw in the assumption, that is fine. Do you get my point? But you can't. So if you are, let's say you uh, talk about what is needed in these industries and how these industries are different, and then you give an example about how these industries are different. So that is an example which you are using to strengthen the point that you made, pointing out the flaw in the assumption. Are you getting my point? So when you give examples that ठीक है ये दो इंडस्ट्री है इनमें जो सिमिलैरिटी है वो नहीं है, these are different. You take example of, let's say, whatever example you have, you use this example to justify the point that you have made, कि ये similar नहीं industries. But if you are saying that
Why? Same point. Ki Ranveer Singh made it big, or any other actress for that matter of say, like Priyanka Chopra made it big. How is this actress saying that? Here you are attacking the argument, not the assumption. This is what I mean by using examples. Uh, is your doubt clear, Varnit? Yes, it is. Thanks. Okay, thanks. Anyone else having doubt with this point? And this is a very important point, guys. Please keep in mind, because many of you have used examples. Using example is not a problem. The context in which you use the example is the issue. Uh, I hope I'm making sense. My screen is full of tiles showing your name, and I have no way to, you know, figure out that. You all understood that, but it's fine. Uh, so this was my third point. Don't attack the content, attack the assumption. Uh, after that, the one I've already said, don't write a clean piece of writing. Neat and clean. Do sanity check. Ensure that there is no grammatical error in your writing, because you are writing analytical writing for a B school. You have cracked cat, and you have so 99.xx percentile, and then you commit mistakes in your grammar, so that comes off as, your it's a bad impression, to be very honest. So don't make grammatical errors. uh, your Try to have a good handwriting. I know many people have shitty handwriting, but you can't do much about it now. At least you can write it in a way that it looks not beautiful but decent, I would say. uh, yes, I think these were the four major pointers that I had in my mind. And also, you know general feedback is fine, but uh, people who need individual feedback, I've given feedback to few of you. Mm, I don't remember to whom, but I've given feedback to two or three people. So I had checked the AWT for them. You can go in the AWT feedback sheet and check who has evaluated your AWT. Get in touch with them. Try to understand in greater depth what's the problem there. If you see, while writing the feedback, you can't write everything, but there can be a lot of points that you find that can be improved in this AWT. But then again, you can't have it all in the feedback sheet. मतलब ओवरऑल जो मेरे दिमाग में सेंस बन रहा है वो मैं लिख दिया, बट when I sit with you, I open the AWT on my screen, we both go through it line by line. That is the point where you get to know कि हाँ सही में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये redundant है, वो redundant नहीं है, ऐसा जो भी कुछ है. So if you got a understanding why your AWT was not up to the mark, that is completely all right. You don't need to get in touch. But if in case you know you don't understand what has happened in the feedback, do reach out to your mentor, and this will be pretty clear when we will be evaluating your AWT 2, which will happen, I guess, in 2 to 3 days. I just want to give you guys some time to work on the feedback. Uh, Try writing AWTs on your own. Uh, you are, a bunch of 20-25 people. You can share it with each other also. Ki you both can write the same topic about the same topic, and then share it. If you are writing, ask your friend to evaluate it, and vice versa. So a lot of learning can happen there as well. क्योंकि खुद से लिख के खुद चेक करने में कोई सेंस नहीं बनता है. तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हें सही लगेगा. ठीक है. So ask your friends to do it. Yes, एक और पॉइंट था यार, मेरे दिमाग से निकल गया. एक और पॉइंट था. 1 second.
Yes. So, so when you got this AWT and you were asked to analyze it, so almost all the AWTs have the point इंडस्ट्री में सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब कैसे कंपेयर कर सकते हो, सिमिलर नहीं है कि है तुम्हें पता नहीं है। और ये पॉइंट सारे बंदों के दिमाग में आएगा सबसे पहले, ठीक है। अब तुम सारे ही एक ही चीज लिख रहे हो, if you are in a panel of 10, so this is very obvious that apart, like other than you, the other 9 people would also write the same thing. Wasn't that pretty obvious? It was, right? But still many of you chose to go with the generic points कि सिमिलैरिटी नहीं है, एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये दे दिया कि मेरे को पता नहीं है कि एक्ट्रेस क्या है, मतलब कितना क्रेडिबल सोर्स है, ये दे दिया। तो यार ये पॉइंट तो सब सारे बंदों के दिमाग में सबसे पहले आएगा ना। अगर मैं एक बंदा हूँ जो तुम्हारा एडब्ल्यूडीज को चेक कर रहा है और तुमने भी वही पॉइंट लिखे हैं, 10 बंदों में 8 बंदों ने सेम पॉइंट लिखा है, बाकी 2 बंदों ने लेट्स से कुछ कुछ तो अच्छा पॉइंट लिखा है यार, मतलब तुमने हो सकता है 3 पॉइंट लिखे हो, तुमने 4 लिख दिए और चारों बिल्कुल जेनरिक, मतलब किसी किसी बंदे से पूछ लो, उसको ये आर्ग्यूमेंट दिखाओ, वो यही बोलेगा। तो तुम्हारा वैल्यू ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम देखो कहाँ कहाँ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। द फर्स्ट पैराग्राफ you don't create any value because you are stating your stance there and you say that okay, now I would like to go forward and evaluate the flaws that are there. कोई वैल्यू ऐड नहीं हुआ, तुम्हारा वैल्यू ऐड हुआ जो तुम फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहे हो, और वो अगर बिल्कुल सिमिलर है बाकी बंदों से, तो तुम्हारे में अलग क्या था यार। मतलब एडब्ल्यूटी उसी के लिए है ना, देखने के लिए कि कितना अच्छा सोच सकते हो तुम, कितना अच्छा फ्लॉ निकाल सकते हो, या फिर कितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हो। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब जब कोई दिमाग में आइडिया है ना, तो ये भी एक बार सोचो। मतलब आई नो इतना टाइम नहीं होता है कि इतना कुछ सोच ले आदमी, बट वो चीज प्रैक्टिस करने से ही आएगी। प्रैक्टिस करो, जब भी कोई आता है तो हमेशा सोचो कि ये जो पॉइंट है यार, ये मेरे अलावा बाकी 9 बंदे भी लिख रहे हैं। वो इंटरव्यूअर पढ़ेगा, उसको सारे एडब्ल्यूटी में सेम ही पॉइंट मिलेंगे। हो सकता है कोई एक बंदे ने ना 2 पॉइंट इतने सॉलिड लिखे होंगे कि तुम्हारा 4 पॉइंट के ऊपर उसका 2 पॉइंट चूज करेगा वो इंटरव्यूअर। मतलब एडब्ल्यूटी से ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे एडब्ल्यूटी देख के तुमको एडमिशन दे देते हैं, बट उसका वेटेज होता है, उसके हमारे स्कोर होते हैं जो ऐड होता है तुम्हारे कॉम्पोजिट स्कोर में। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मेरे को नहीं दिखी यार तुम्हारे एडब्ल्यूटीज में। मोस्टली मैंने जितना चेक किया है ना भाई, सब में ठीक है, सब में ये पॉइंट डालो कि सिमिलैरिटी है, बट कुछ और भी तो पॉइंट डालो यार। कुछ तो ऐसा डालो, कुछ तो ऐसा सोचो कि हाँ ठीक है, ये पॉइंट मेरे को लगा कि ठीक नहीं है यार, ठीक नहीं है। ऐसे एक बंदे ने लिखा था कि इस बंदे ने इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर लिखा है, बट वो वो अलग अलग के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकती है, राइट। अब मतलब लेट्स से कोई सचिन तेंदुलकर के बेटे को अगर एक्टिंग करनी है, अब उसको आउटसाइडर बोलेंगे कि इनसाइडर बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए भी आसान है ना, उसके लिए भी आसान है, ठीक है। अभी लेट्स से कोई ऐसा कुछ भी है यार, कोई मूवी वूवी है यार, किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, उसको एक्टर बनना है, उसके लिए भी आसान, ठीक है। अब वो क्या आउटसाइडर हुआ, इनसाइडर हुआ, वहां पे ग्रे एरिया है, राइट। एक बंदे ने ये पॉइंट पकड़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार वो पॉइंट तुम जितनी एडब्ल्यूटी थी ना, सिर्फ उसी बंदे ने पकड़ा है। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा कौन बंदा था वो। सिर्फ उसी बंदे की एडब्ल्यूटी में ये लिखा है कि इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का कुछ डिस्कशन ही नहीं है कि कौन आउटसाइडर होता है और कौन इनसाइडर होता है। और जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ना कि जो तुम बोले थे कि ठीक है एग्जाम्पल कैसे देते हो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेट्स से यू पॉइंटेड आउट दिस फ्लॉ एंड देन यू से दिस कि ठीक है पॉलिटिशियन का बेटा है, उसको मूवी में जाना है, तो हु विल डिसाइड कि वो इनसाइडर है या आउटसाइडर है, क्योंकि उसके लिए भी ये इजी है जो वो एक्ट्रेस कन्वे करना चाह रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम वो एग्जाम्पल दे सकते हो। ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल है वो एजम्पशन को अटैक कर रहा है, नॉट द आर्ग्यूमेंट। वर्णित तुम्हारा ये डाउट था, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ठीक है। यही तुम्हारा डाउट था ना कि एग्जाम्पल कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ एग्जैक्टली यहाँ पॉइंट अभी जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो वो एग्जाम्पल तुम्हारे assumption को अटैक करने में हेल्प कर रहा है, ना कि सीधे आर्ग्यूमेंट को।
और वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यार, वो बंदा का पॉइंट इतना अच्छा था ना कि मैं सिर्फ और उसके पॉइंट भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को किसी एडब्ल्यूटी में और वो पॉइंट मिला ही नहीं, और वो बंदा कितना बढ़िया सोचा वो पॉइंट। बाकी सारे लिख रहे हैं कि वही सिमिलैरिटी है, किसमें ज्यादा एफर्ट है किसमें कम एफर्ट है, पूरी दुनिया लिख रही है गाइस ये। ठीक है, तो यही मेन कुछ फीडबैक था, जनरल फीडबैक। बाकी इफ यू वांट गेट मोर क्लैरिटी एज टू व्हाट योर फीडबैक मींस, please reach out to the mentor who evaluated it, and we'll do subsequent AWT sessions, as in I'll give you questions, the same thing which we did for AWT 1. So we were supposed to have that today only, but then we decided against it because we want you to work on the feedback that has been shared with you now. I'm hoping that now you have a much better understanding as to what all things should be there in your AWT, what mistakes you guys were committing, and what you should not do going forward. So you'll get 2 to 3 days. I guess we'll have the AWT most probably on 24th, I guess. तो आज तो खत्म हो गया, कल का दिन है, और परसों आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। तो वो 24th को शायद करेंगे, तो यूटिलाइज दीज 2 days टू अपना AWT देखो, अपना AWT देखो, और जो मैंने पॉइंटर बताया उस पर उसको इवेलुएट करो कि तुम्हें क्या लगता है, जो मैंने बताया, क्या तुम्हारे पास स्ट्रक्चर था, नहीं था, क्या तुमने फिलर्स भरे अपने AWT में, लाइक पहला लाइन पढ़ो और फिर पूरा एंड। फिर एक और है, बहुत लोगों ने ना बस सिर्फ हर चीज में लिख दिया डेटा मिसिंग, डेटा मिसिंग, मोर डेटा कुड हैव हेल्प्ड, मोर डेटा कुड हैव हेल्प्ड। मैं सामने आके अगर तुमसे राइट देयर पूछ लूंगा ना कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी यूज होगी, तुम्हें नहीं पता है वो स्ट्रेटजी, तुमने बस लिख दिया है क्योंकि तुमने एक काउंटर ढूंढ लिया है, और बस वो पॉइंट लिख दिया, तुम्हें लग रहा है कि वो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। अगर वैल्यू ऐड कराना है तो बी स्पेसिफिक अबाउट इट। यार ऐसे तो तुम कुछ भी लिख दोगे, मैं कोई भी आर्गुमेंट दूंगा तुम बोलोगे मेरे को और डेटा चाहिए, तो मैं कुछ भी दे दूंगा, मेरे को और डेटा चाहिए, आर्गुमेंट वीक है। तो हर चीज में और डेटा, और सब में लिखा हुआ है ऐसे 2-3 पॉइंट लिखा है, और मोर डेटा नीडेड, मोर डेटा नीडेड, मोर इनसाइट्स नीडेड। अरे व्हाट इनसाइट, व्हाट डेटा? तो जेनरिक अगर तुम्हें लग रहा है तुम बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हो, तुम कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना। सो नाउ अपने AWT 1 को देखो, उसमें स्ट्रक्चर क्या है, और ये भी देखो अगर तुमने एक पॉइंट लिख दिया पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, पैराग्राफ के एंड तक में क्या वैल्यू ऐड किया तुमने एक्स्ट्रा लिख के। भाई लोगों ने पहले लाइन में लिख दिया है, 4 लाइन उसी को लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, ये फ्लॉड है, मुझे लगता है इसमें और डेटा चाहिए, ये बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। अरे समझ गया भाई, पहले लाइन पे खत्म कर, आगे बढ़। तू अपना वेस्ट, मतलब क्यों वेस्ट कर रहे हो स्पेस को? थोड़ा वो जो लिखने में टाइम वेस्ट करे वो सोचने में लगाओ, कुछ अच्छा लिखो। ठीक है, तो ये वाला चीज बहुत लोगों के साथ दिक्कत थी। प्लीज फिलर्स मत यूज करो अपने AWT में। आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन वो अटैक करने वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो चेक करो अपने AWT में। एग्जाम्पल्स को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है वो चेक करो। सैनिटी चेक और ग्रामेटिकल एरर्स के लिए चेक करो। यही 4-5 चीजें हैं जो मैंने शेयर की। अपने AWTs को इवेलुएट करो यार, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है यू डिड वेरी बैड जॉब, तो इस AWT को ना वापस से लिखो, ये सारी चीज कंसिडर करके खुद से लिखो। एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इवेलुएट इट इफ यू रीच आउट टू मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप कि ये मैंने वापस से लिखा है, प्लीज इवेलुएट। या फिर कुछ नया लिख लो, चलो ये तो पुराना हो गया, अब तो बहुत इस पे दिमाग लग गया तुम्हारा, कोई नया टॉपिक लेके खुद से लिखो, बाद में आपस में ही भेज लो यार, आपस में भेज लो, उससे भी लर्निंग हो जाएगी आपस में। या आई एम होपिंग तुम कुछ ना कुछ लोग तो आपस में बात करते ही होंगे एक साथ, मतलब वो तो, और नहीं भी करते तो रीच आउट कर लो कि यार लेट्स डू AWT टुगेदर। एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है, 3 लोग या जितने लोग बैठते हैं ऐसे क्रिस क्रॉस कर लो और इवेलुएट करो, फिर आइडियाज अच्छे आएंगे यार ग्रुप में, तुमको उससे सीखने मिलेगा, उसको तुमसे कुछ सीखने मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम ये बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट बना रहे हो कि भाई 1.5 घंटा यही चल रहा है। मिलो, 5 मिनट में टॉपिक डिसाइड, 20 मिनट में आंसर लिखा, 10 मिनट फीडबैक, आधे घंटे 40 मिनट में खत्म ये सब। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू।
तो मैं फीडबैक तुरंत नहीं दे पाऊंगा, डिपेंड्स ऑन क्या क्या चल रहा है या जो भी है, बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड वन मोर थिंग, कोई व्हाट्सएप में रीच आउट करता था, मेरे पास नंबर सेव नहीं है, तो मैं भूल जाता हूँ फिर कि किसको रिप्लाई किया किसको नहीं किया। तो अगर मेरे से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मेरे को वापस पिंग कर दो, इट्स ओके, पिंग करना चलता है। अगर मैं रिप्लाई नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों का मिस कर दिया, 2-3 बार टेक्स्ट कर रहे हैं, तो मैं लगा हाँ ठीक है, तेरा ये काम है, तेरा वो काम है। या फिर और भी जो लोग हैं, जैसे और अहमदाबाद के और भी हैं, अंशिका है, सायन है, उनको भी रीच आउट कर सकते हो, वो भी हेल्प कर देंगे तुम्हारी, नॉट जस्ट मी। कोई और भी जो मेंटर हैं जो अहमदाबाद से हैं, उनको रीच आउट करो और वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो यार आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू AWT 2, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी क्वालिटी बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो, नाउ दैट आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लर्न पर से। अब तुम्हारा प्रैक्टिस है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, और तुम कैसे लिखते हो वो है। सो प्लीज 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 स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स, क्योंकि इट्स हाई टाइम यार, बहुत सो पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल जाएंगे ये दिन, और इंटरव्यू आ जाएगा। मतलब तुम जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, मतलब कोई टॉपिक मिला और तुम्हारे दिमाग में मेंटल ब्लॉक आ रहा है कि यार क्या लिखूं, लिखूं क्या, पॉइंट ही नहीं आ रहा दिमाग में, वही चीज ओवरकम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा AWT लिखो, तो ही आएंगे पॉइंट आइडियाज दिमाग में। ठीक है। एनी डाउट, और एल्स मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। एनी डाउट, एनीथिंग इन पर्टिकुलर यू वांट टू आस्क? सर AWT प्रैक्टिस करने के लिए कोई सोर्सेस है? यार मैं एक मेरे पास एक है डॉग, जिसमें से ये मैं बॉलीवुड वाला दिया था, तो मैं वो शेयर करता हूँ वो वाले ग्रुप पे, और उसमें से भी लिख सकते हो। ओके सर। और गूगल पे मिल जाते हैं बहुत सारे यार, गूगल कर लो, AWT टॉपिक्स हजारों पड़े हैं। बट रेलेवेंट का इशू है। हाँ रेलेवेंट का, मतलब रेलेवेंट का है, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, कोई नहीं, शेयर कर दूंगा मैं। या फिर तुम्हारे और कोई दोस्त है, उनके AWT से पूछ लो। मतलब मेरे में, जैसे मैं बताता रहा हूँ, मेरे में कहा था, तुम इस बारे में सोच सकते हो, उसमें आता कि वोकल फॉर लोकल के लिए गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, बट ऐसा ग्राउंड लेवल में मतलब एक तरफ हम बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, और दूसरी तरफ लोग उन्हीं सामानों को खरीदने जब वो बेचने आते हैं, तो शायद ऐसा कुछ था कि वो नेगोशिएट करते हैं, या मतलब तुम शॉपिंग करने जाते हो ना किसी ब्रांड में, वो बोलता है हाँ ये 2,500 का एक शर्ट है, तुम ले लेते हो, और वही कोई ऐसा इंडिजिनस या कोई लोकल बेचने आता हो, वो बोलेगा 500 रुपये का ये है, तुम बोलोगे नहीं भैया 350 रुपये कर दो। तो ये आइडिया था मेरा कुछ ऐसा AWT का, तो इसको उन्होंने बोला था कि एनालाइज कर। तो जैसे ये भी एक टॉपिक है, इस पे भी तुम लिख सकते हो, तुमको लग रहा है कि तुम इस पे लिख सकते हो तो लिखो, मेरे को भेजो, मैं एवेलुएट कर लूंगा। तो इस टाइप के टॉपिक होते हैं। तो मैं भेज दूंगा, वैसे एक डॉक है, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं कुछ कुछ टॉपिक्स, वो IMS का ही शायद डॉक था, उन्होंने AWT सैम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो भेज दूंगा। उसमें मेरे को लगता है 8 से 10 होंगे, मैं बॉलीवुड वाला भी उसी से दिया था मैंने, तो शेयर करता हूँ मैं वो, ढूंढना पड़ेगा, कल तक करता हूँ मैं शेयर। एनीथिंग एल्स? Is it okay to underline some parts of the AWT, or it adversely affects नहीं the? नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स टोटली अप टू यू। अगर तुम्हें लग रहा है तुम कुछ हाईलाइट करना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने कुछ पॉइंट ऐसे लिखा और तुम उसको, यू वांट द इंटरव्यूअर टू नोटिस इट, तो डू इट। मतलब लोग करते हैं यार, रंग बिरंगा पेन लेके आए थे मेरे में तो लोग, मैं तो एक ब्लू पेन के साथ चला गया था बस, वहाँ पे लोग भाई मस्त एकदम ब्लैक वैक लेके आए थे, मैं देखा, मतलब अरे क्या चल रहा है ये तो ब्लू पेन लेके आए तो वही है, ऐसा ही है। गो। Also, sorry. हाँ, बोलो बोलो बोलो। Also, one thing, like I've noticed that when I'm writing an AWT, नीचे वाला part becomes way more concentrated than the हाँ part. वही है ना, दैट शोज लैक ऑफ प्लानिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये पॉइंट भी शेयर करना था, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। तो AWT क्या होता है ना, 20 मिनट टाइम है। अब स्टार्टिंग का क्या करो, स्टार्टिंग का कुछ टाइम है ना, पहले सोचने में लगाओ, राइट अवे लिखना मत स्टार्ट करो, पहले तो पीछे रफ के लिए देते हैं ना जगह, पहले नहीं, पीछे जाओ, लिखो कि ये मेरा है, ये मेरा स्टांस है, जो भी है पीछे पहले लिख लो कि ये पॉइंट मेरे को लिखना है, ये मैं लिखना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा कोई करे कुछ लिखूंगा। थोड़ा टाइम दो उस चीज में, मतलब अपने 20 मिनट में ना वो ये पूरी चीज को करने के लिए 3-4 मिनट दो।
ठीक है, और फिर लिखना स्टार्ट करो। तो जब ऐसा क्या होता है ना कि तुम क्या करते हो कि टॉपिक आ गया, मैं काउंटर करूंगा और लिखना स्टार्ट कर दिया, और स्टार्टिंग में, और बहुत लोगों का होता है यार, स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग इतनी बढ़िया, मतलब मजा आ रहा है पढ़ने में, और लास्ट पैराग्राफ भाई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया बंदे ने। तो उसमें और पता चल रहा है कि भाई लास्ट आते आते इसकी तो बैंड बच गई है, या तो टाइम कम होगा, या तो पता नहीं क्या किया है इसने लास्ट में। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि प्लान करो उसको, तो ये नहीं होगा। अगर तुम प्लान करोगे कि मेरे को ये पॉइंट लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, वो ऑलरेडी प्लान है तुम्हारे दिमाग में, वो अचानक से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में लास्ट में, जो तुम्हें लास्ट में इंक्लूड करना है। आई गेटिंग माय पॉइंट? क्या होगा लास्ट में कंजेस्टेड इसलिए होता है क्योंकि लास्ट में लगता है अरे यार ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, फिर वो स्टार्टिंग में पूरा अच्छा स्पेसिंग रहता है, और लास्ट में आके वो बहुत कंप्रेस हो जाता है। तो वो चीज़ के लिए प्लान योर AWT, मतलब स्टार्टिंग का 3-4 मिनट दो, और बाकी फिर लिखने में 10-12 मिनट लगाओ। बाकी फिर जो और टाइम बच रहा है तुम्हारे पास 3-4 मिनट, वो तुम, या जो भी टाइम बच रहा है 3-4 मिनट, उसको देखो कि इतना बचता नहीं है वैसे। 3-4 मिनट सोचने में जाएगा तुम्हारा, लिखने में जाते हैं 10-12 मिनट, 16-17 मिनट ऐसे ही हो गए, 20 मिनट का AWT है, तो 2 मिनट बचेंगे। उसमें एक बार बस तुरंत एकदम फटाफट फटाफट स्किम कर लो उसको, टू चेक फॉर एनी ग्रामेटिकल एरर्स और ऐसा कुछ अगर तुम्हें लग रहा हो। तो ये चीज को ओवरकम करने के, तो यही बोल रहा हूँ ना यार, प्रैक्टिस। मतलब सी ऑल ऑफ यू नो प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है यार, मतलब तुमने कैट दिया है, स्कोर इतना अच्छा लाए हो, तो तुमने मॉक भी दिए होंगे काफी अपने, तो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। सो आई कुडंट एम्फसाइज मोर ऑन दिस टॉपिक, मतलब ये समझ में तुम्हें खुद ही आना चाहिए। तो बस वही है, प्रैक्टिस करो और हो जाएगा सब। संस्कार, योर क्वेश्चन। Yeah, actually, I wanted to ask कि ये जो flaws and recommendations है, can we like highlight it in bullet points or it should be in paragraphs only? योर चॉइस, मतलब बुलेट पॉइंट तो मेरे को और अच्छा ही लगेगा, मतलब All और right. ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगता है। हाँ वो तो वही I just wanted to confirm कि कोई वो ऐसा prescribed structure तो नहीं है ना कोई paragraph का. प्रेस्क्राइब स्ट्रक्चर नहीं है भाई, वो एक पेज तेरे को दिया हुआ है, तेरी मर्जी है, मन चाहे जैसे लिखना है लिख, बस, लेकिन वो एक Okay. पेज है, योर कॉल। Okay, thank you. कूल। एनी मोर डाउट्स? एंड वो एक पेज में पीछे नहीं जा सकता ना कुछ भी करके। हाँ, वाह वाह, बड़ा क्वेश्चन। भाई नहीं जा सकता ऑब्वियसली, मुझे रफ ठीक है, करना है, ऐसे तो तू मन मर्जी कहाँ तक लिख देगा। ठीक है, ठीक है। एक पेज सिर्फ आगे लिखने का और पीछे रफ करने के लिए बस। संस्कार, या गो अहेड। So ये वाला थोड़ा स्पेसिफिक है कि लास्ट में जैसे जो हम recommendations मेंशन करते हैं, so on the basis of that recommendations it might be कि जो वो flawed statement है वो सही प्रूव हो जाए या गलत प्रूव हो जाए, because we don't know, अभी we are not sure because of the assumptions that. मेरे को समझा नहीं यार तेरा पॉइंट। अब जैसे सपोज एग्जांपल में ये बॉलीवुड वाला केस ही अगर लूं, सो अगर लास्ट में मैं कुछ recommendations दूं कि लाइक अगर उसने इसको कंपेयर करके कुछ बोला होता तो इट माइट बी लाइक दिस, या उसका अगर आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का डेफिनेशन भी अगर थोड़ा क्लियर होता तो वी कुड हैव टेकन स्टैंड। तो इसमें ये भी हो सकता है कि उसका स्टेटमेंट मतलब। हाँ, तो सी आई गेट योर पॉइंट नाउ, ठीक है। तो you are countering the argument, ठीक है, because you think that there isn't sufficient, or the assumption that are behind this argument are faulty, ठीक है। तो when you are giving recommendations, so obviously वो improve होगा, right? अगर let's say अगर मैं तुम्हें ये पूरा लिख के दे ही देता कि ये एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस का है जो इतना she couldn't make it big in Bollywood, and then insider outsider, मतलब बोली nepotism in particular, if I put in there, तो फिर तो क्लियर ही हो गई ना यार चीजें, बहुत सारी इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वाला चीज थोड़ा क्लियर हो गया नेपोटिज्म वर्ड डालने से, ठीक है। और अगर मैं डाल दिया कि वो कोई एस्पायरिंग एक्ट्रेस, लेट्स से प्रियंका चोपड़ा ही लिख दिया, तो क्रेडिबिलिटी वाला एंगल हट गया। तो यही सब चीजें तुम्हारे रिकमेंडेशन में जाएंगी। ये सारी चीजें नहीं थी इसलिए तूने काउंटर किया उसको, और जब तूने काउंटर किया तो तू बता रहा है कि अगर ये सारी चीजें होती तो जो इस आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ है ना, वो कम हो जाता। समझ रहा है? ओके ओके, गॉट इट। यस। ओके, थैंक यू। मतलब ऐसा नहीं है कि तू काउंटर करना स्टार्ट किया और फिर तू फ्लॉ दिया, फिर तू रिकमेंडेशन दिया, फिर तू बोलता है अब मैं इसके फॉर के साइड पे आ गया हूँ। ये नहीं कर सकता है तू। ठीक है ठीक है, ठीक गॉट है। इट। हाँ।
Anything else? I guess side outs clear हो गया. So thank you guys. Thank you for joining. Please keep practicing. बहुत ज़रूरी है AWT वाले माइंडसेट में घुसना, क्योंकि सबको आदत होती है वैट लिखने की. So please practice. और मैं शेयर कर दूंगा वो ग्रुप पे. If I don't do it by tomorrow evening, please ping me, any one of you. Okay, sir. ठीक है. और थोड़ा अगर कुछ काम निकलवाना मेरे से तो प्लीज कीप पिंगिंग मी. ठीक है, व्हाट्सएप पे. कूल. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू. बाय. Thank you. Thank you.